Today we are going to solve the next part of these questions. So especially these 2 marks questions which are given in model paper first. So we have totally here 8 questions. Out of every question contains 2 marks. So totally you will get 16 marks here if you solve it perfectly. So first question is find the 25th term of an AP. So you need to find 25th term. So when you say this 25th term, so 25th term is denoted by, this is 17th question, so we have 25th term is denoted by A25 is equal to how much? Find means we have to find this A25 term. So in order to find this A25 term, so here AP is given, so let us write down this AP. AP means arithmetic progressions. So 2, 6, 10, 14 data dash. If AP is given 2, 6, 10, 14 etc., so then you have the first term A is equal to 2. So you know the formula for D is equal to what? A2 minus A1. So substitute the value of A2. So here this is A1. So if I say A2, A3 etc., A2 is how much? 6. So 6 minus 2 is how much? Is equal to 4. So D value is 4. Now you need to find A25. So let us find A25 is equal to how much? So we know the general formula. Okay, general term of an AP is given by so you have the formula that AN is equal to A plus N minus 1 of D. Now substitute N is equal to how much? Now substitute N is equal to 25 to get 25th term. Substitute N is equal to 25 to get A25. So here in the place of N you substitute the A25. A25 is equal to, what is the A we calculated here is 2. So 2 plus what we have? N minus 1. That means 25 minus 1 into D. D is 4. Now A25 is equal to, so how much is the value of this 25 minus 1 is 24. You have to multiply with 4, and here plus as it is, and 2 also we will write as it is. 24 4 is, you have 96. So this term became 96 now, plus we have to add 2. So total we will get 2 plus 96. 2 plus 96 is, we have 98. So this is the A25 term. So now when we see this question again once more, so if you observe this question, so they told that find the sum of, next question is also based on AP only. See, find the 25th term of an AP, 2, 6, 10, 14 etc. That 17 question we solved. So we got the formula that, so whatever the formula we used, sum of, so here we need to find general term. So general term of an AP is given by AP is equal to, we have this general term. So general term is given by AN is equal to A plus N minus 1 of D. So this is the general term we have. So if we know what is A, what is the value of D, and what is the value of N, so we can get any term of the particular AP. So understanding the first term, understanding the common difference, we can calculate any terms. So we solved in this type the whole problem. So now let us go to the next problem. So next question we would observe here is find the sum of 18th question we have. So we have 18th question. So let us solve this 18th question now. So they told find the sum of first 20 terms of the AP or arithmetic progressions. So what the formula you have, first you understand the formula to find, okay, sum of any terms.
sum of terms of AP is given by. AP is given by, you know the formula that, so sum of n terms is denoted by Sn, so is equal to, if you should have to know, n by 2. So you have to multiply with 2a plus n minus 1 of d. So this is the formula to calculate sum of the terms. So here they told 20 terms. It means what? Number of terms is denoted by n here. So n is equal to 20 terms they gave. Okay, and so they gave the AP also. What is the arithmetic progression in the question? 3, 8, 13, dash dash, etc. So write down here, arithmetic progression is how much? So arithmetic progression is here. So you have 3, 8, 13, dash dash dash. So first term here is 3, and the common difference is here 8 minus 3. It means 5. So knowing the values of n, knowing the values of a and d, so you can calculate this sum of any terms of the given AP. So now substituting these values, okay, so now, so we will say put a, d and n value in Sn formula. So Sn is equal to n by 2 is there, 2a plus n minus 1 of d. So in this formula, if I substitute n is how much? So we need to calculate sum of how many terms. So we wrote here already sum of how many terms? 20 terms. So S20 we need to calculate. S20 is equal to 20 by 2 as it is. So 2a means 2 into first term. First term is a is equal to 3. Substitute a is equal to 3, and n is again 20 minus 1. D is how much? You have 5. So 20 minus 1 is 19. 19 into 5 is how much? 5 nines are, so you have 45. 5 4 carry, 5 ones are 5, so plus 4 is 95. So this is 95. Total multiplied is how much? 95. This multiplied is 95. So write down here 95 plus 2 3s are 6. 95 plus 6 you need to do, and 2 1s are 10s are. So you have to multiply this with 10. So we'll get the answer. Yes, 20 is equal to sum of 20 terms is equal to. Now 95 plus 6 is 101. So if you multiply this 101 with 10, so you will get how much? 1010. This is the sum of 20 terms value. So this we solved now in very easy steps. Now you can observe that the 18th question is given in choices. So here we solved the first problem, but you need to solve also the second problem. So that we will give you some clues and tricks to solve this. So you need to find 30 positive integers. Sum of 30 positive integers, that means yes 30, is equal to how much? That they asked. Okay, so this is the second in this choice 18 question. So you can solve any of these two in the exams. So yes 30 आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको एक AP लिखना होगा. AP इज इक्वल टू हाउ मच? सो AP स्टार्ट होता है 6 से डिविजिबल वाले नंबर से. तो पहला नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर होता है 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18 डैश डैश डैश, कहाँ तक? n इज इक्वल टू 30 टर्म तक. यहाँ पर सो यू नो द फॉर्मूला. सो yes 30 is equal to how much you need to calculate. So you have the formula Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 of d. तो यह फॉर्मूला है. तो इस फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट करना है कि सम ऑफ 30 टर्म्स कितना होता है.
तो n इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। और आपको यहाँ पर a मालूम होना चाहिए। a यहाँ पर AP में देख सकते हो कि पहला टर्म कौन सा है, 6। a इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाय a2 minus a1. So this is the second term you have, this is the first term you have. So 12 minus 6 is how much? 6. So this is the common difference, and after this common difference, so you have number of terms is 30. So substitute in the given formula. So then you will get what? Yes, 30 is equal to 30 divided by 2. This into 2 into a कितना है 6 प्लस n is again 30 minus 1 into 6 you have is equal to 30 by 2. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 हो जाएगा। 30 by 2 is 15. So you have 2 6 again 12 plus 29 into 6. तो 15 मल्टीप्लाई करना है 29 इंटू 6। अब 29 इंटू 6 यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं रफ वर्क में। 9 6 इज 54, 5 कैरी, 6 2 12, सो 17, 174। सो 12 प्लस 174। अब 12 प्लस 174 करना है। 2 प्लस 4 इज you have 6 and 1 plus 7 is 8, so 186 into 15 if you multiply आपको आंसर मिल जाएगा। सो अभी 186 into 15 कर लेते हैं। अब 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया 2790 के आसपास। उसके बाद 2790 के आसपास जब आता है तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो आंसर आ गया 2790। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यह नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देख सकते हो 19th वाला क्वेश्चन। सॉल्व, ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके। लीनियर का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दिया गया है। तो पहला इक्वेशन को हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दिया गया है सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है कि यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच एंड y इज इक्वल टू हाउ मच। अब इसे सॉल्व करने के लिए ये जो दो इक्वेशंस हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इन दोनों इक्वेशंस को आपको ध्यान से देखना है। यह x के टर्म्स में है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, ठीक है। इसमें 3 है और यहाँ पर 2 है। अगर दोनों को किसी तरीके से एक वेरिएबल को आपको 0 करना है, 3x माइनस 2x x होता है, प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस वाई, तो ये प्लस होता है। तो आपको करना क्या है, ऐड कर दो 3x प्लस 2x 5x, y माइनस वाई 0, 15 प्लस 5 20, तो x का वैल्यू कितना। तो लेट अस ऐड इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 करोगे 3x प्लस 2x कितना होता है, 5x होता है। और y प्लस ऑफ माइनस वाई मतलब 0 हो गया। y माइनस वाई इज, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ y प्लस ऑफ माइनस वाई, एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, इज इक्वल टू 15 प्लस 5। अब बताओ y प्लस ऑफ माइनस वाई कितना होता है, y प्लस ऑफ माइनस वाई होता है 0, क्यों, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, y माइनस वाई इज 0। सो प्लस 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज अगेन 20 हियर। अब x इज इक्वल टू कितना, 20 डिवाइड बाय 5 होता है। तो दिस विल बी व्हाट, सो यू हैव 4।
x का वैल्यू 4। अगर x का वैल्यू 4 आता है, x इज इक्वल टू यू गॉट 4, तो कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। मान लेते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 ले रहे हैं, तो x का वैल्यू अगर 4 है, 3 इंटू 4 इज हाउ मच, यू हैव 12 प्लस y इज इक्वल टू 15। y ऐसे ही रख दो, 12 को इधर लेके जाना है, जो इज इक्वल टू के वो साइड लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 12, इट मीन्स 3, y की वैल्यू 3। So this is the answer you have, x is equal to 4 and y is equal to 3. अब चेक करते हैं, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 3 इज 15। अब चाहे तो चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 4 है, सब्स्टिट्यूट कर दो 4 प्लस y कितना है 3, ये हमने सिर्फ LHS ले लिया, LHS में सब्स्टिट्यूट किया, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, जो कि RHS के बराबर है। तो अभी हम देखते हैं 20th क्वेश्चन, जो बोला गया है कि सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह गिवन इक्वेशन है, तो गिवन इक्वेशन आप लिख लो एक बार। सो गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, जो कि डेरिवेशन से मिल जाता है अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हो। तो यह जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करना होता है। सो यू हैव टू कंपेयर विथ a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। सो वी विल राइट हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 और c इज इक्वल टू 1 अगेन। तो यही अगर आप फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब कितना होता है माइनस ऑफ माइनस, पहले यहाँ पे फॉर्मूला में है b का वैल्यू माइनस 3 प्लस और माइनस, उसके बाद आपको रूट लेना है एज इट इज। बी स्क्वायर का वैल्यू, b कितना है माइनस 3 है, b इज हाउ मच माइनस 3, सो माइनस 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस 3 स्क्वायर के बराबर, माइनस 4 एज इट इज, a मतलब 1, c मतलब फिर से 1, डिवाइड बाय कितना 2 इंटू ए का वैल्यू, 2 इंटू ए है, इसी वजह से a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहिए 1। नाउ x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 प्लस और माइनस। अब बताओ कि माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है, माइनस 3 स्क्वायर का मतलब है माइनस 3 इंटू माइनस 3, विच मीन्स माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, सो प्लस 9 आ जाएगा। 9 माइनस 4 इंटू 1 4, सो 9 माइनस 4 डिवाइड बाई कितना 2, 2 इंटू 1 इज 2। अब देखो 9 माइनस 4 कितना होता है, सो यू हैव 9 माइनस 4 इज 5, सो x इज इक्वल टू कितना बना 3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2। तो यही आपका आंसर है। इसे आप सेपरेट सेपरेटली लिख सकते हो, 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 और 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। दिस इज द आंसर यू हैव फॉर दिस क्वेश्चन 20. So here we have 21st question. So find the discriminant of the quadratic equation 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0 and hence write the nature of the roots. So we are going to solve this problem now. So you should know about the discriminant. So discriminant is given by del is equal to, so this is the discriminant, you have symbol. So b square minus 4ac. So if this one is the discriminant you have, b square minus 4ac, so you should have one quadratic equation. So if this discriminant is equal to
0 you have. So it means roots are real and equal. If discriminant is equal to b square minus 4ac is greater than 0, roots are real and positive, and these are distinct. Discriminant is equal to b square minus 4ac is less than 0, roots are imaginary. So this you should know before solving this problem. And you have here question 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. You have 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. So you compare this with the ax square plus bx plus c is equal to 0. So here a is equal to 2, b is equal to minus 6, c is equal to 3. So a is equal to 2, b is equal to minus 6, c is equal to 3. So now what you can do is that del is equal to, you substitute in the formula b square minus 4ac to find the discriminant. So del is equal to b square minus 4ac. B is how much? Minus 6. Minus 6 square minus 4 into a is 2 and c is 3. Minus 6 square is how much? 36 minus 4 2s are 8, 8 3 is 24. So this will be what? 12. This is greater than 0. So you check the condition for greater than 0. Roots are real and distinct. So you write that. So here del is equal to b square minus 4ac, value is greater than 0. Therefore roots are real and distinct. So this is the answer for your now question. Next part of the question is here we have x square plus ax minus 4 is equal to 0. So here they gave the equation x square plus ax minus 4 is equal to 0. So if we want to prove this is has a distinct and real roots, so first what you do is that del is equal to, so this determinant or discriminant is equal to, so you have this b square minus 4ac, so should be greater than 0. You need to check this. So if you want to check this, if greater than 0 का मतलब होता है कि पॉजिटिव होना चाहिए. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप फाइंड कर लो. डेल इज इक्वल, सो दिस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, so you have b square, so here b square value is how much? So b is how much? Equal to a. Okay, so you substitute the value here, a square minus 4 into a is 1 and c is how much? Minus 4. Now del is equal to a square minus into minus, this will be plus 4 4s are 16. So this is a positive number now. Okay, so if you take greater than 0, then it means a square is, so send the 16 here, it will become minus 16. Okay, so this is proved that a square is greater than 0. So you have to add 16 to the a square, so which will be greater than 0. It means what? Roots are real and distinct. So now let us solve this 22nd question. So we need to find the distance between 2 points. So here 2 points are given, A and B. So let us consider that A is given 2 comma 3 and B is given 10 comma minus 3. So distance formula is, distance is equal to, you have x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Distance between 2 points. So this is x1 y1, this is x2 y2. So now x2 is how much? 10. 10 minus 2 whole square plus y2 is how much? Minus 3. So minus 3 minus in the formula and this minus 3 whole square. So this is all under root. So if you solve these things, so you will get the distance. What is the distance required? So 8 square
10 minus 2 is 8, 8 square. So minus 3 is minus 6 square. So this is under root. So 8 square is 64 plus 6 square is 36. So this will be what you have, 100. So 4 plus 6 is 0, 1 carry, so this is 100. Okay, so if you add 64 plus 36, this is 100. So root of 100 is, you have 10. So answer is 10. The distance between 2 points is how much? 10 units. So you write here 10 units. This is the process to solve these questions. So now let us solve the next question. Now let us solve this 24th question. So in the 24th question, you can see that so you have one triangle is given here. This is 90 degree. So if we say, so your acute angle is alpha, then you need to find cos alpha. And if you say your acute angle is theta, you need to find sin theta. So first let us talk with respect to this alpha. See, I will draw here one more diagram. This is 90 degree. So name is given PQR. This is alpha here. Alpha is an acute angle. So if alpha is an acute angle, so here they gave the measurement also, 5 centimeter, 12 centimeter, 13 centimeters. If alpha is a acute angle, so this is the base on which it is standing. So you need to calculate cos alpha. So cos alpha means, cos alpha is equal to, you have formula, so base by hypotenuse, base by hypotenuse. So what is the base? 5 centimeter divided by hypotenuse is 13 centimeter. So centimeter got cancelled, remains 5 by 13. So 5 by 13 is the cos alpha value. So now what is sin theta? So you think about this diagram now. So here it is 90 degree, this is theta. So opposite to this is this one, and you have the base, this one. This is 5 centimeter, this is 12 centimeter, and this is 13 centimeter. So PQR. So theta is here. Okay, so opposite, this is opposite one. So we have the sin theta formula. Sin theta is equal to opposite by hypotenuse. Opposite is 5 centimeter divided by 13 centimeter. So centimeter will get cancelled. This answer is also 5 by 13. So this is the process in which you can solve this. Only here you can remember is the formulas for the trigonometric function. Sin theta is equal to, you have opposite by hypotenuse, and cos theta is equal to base by hypotenuse, and you have tan theta is equal to opposite by base. So like that you can remember the formulas, and you can solve easily any difficult problems you have only by just understanding clearly every topic. So thanks for watching this, and we can have the good video at the next time. But so for solving these third main questions, that so total we have 27 questions in next main. So we will solve all these 9 questions, which is consist of 27 marks. Okay, thanks for watching this, and we will have more explanation at the next class. Thank you for watching.